Hi everyone, welcome to the class of the Indian Constitution. In the last class, we have discussed about the presidential. Today's class going to about Vice President of the India. Okay, so पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है. What do you understand when we talk about the Vice President? What do you understand by this term? Okay, like there are the dean of your university, master of your school. Okay, every person has a vice person for the specific higher designation. Principal, vice principal. So if you are going to any kind of the responsibilities, you see that there is the vice position is associated everywhere. There must be the appointment of someone who is having similar kind of the capacity, similar kind of the power of taking the responsibilities to take care of someone when the head person is not in the duty. For example, if you know it in a better way, like when you are in the college life or the school life, when there is the access of the principal is the higher designation. If I am serving at a higher designation or a higher post or a authoritative chair, then there must be someone who is having equivalent mental power, equivalent educational status, equivalent capacity to take the responsibility of mine when there is any need, when I am absent, when there is when I need any kind of suggestion, like any kind of the higher designation that is not going to be balanced by one person at a time, right? Even if there is the if even if there is the chief minister of the state, there is the deputy chief minister of the state. Right? So there must be every designation needs a person who is having the similar kind of capacity to handle the position as the head official as the head official. All right. When we are choosing the vice chairman, that means the person who is being chosen as the vice chairman, that person is also have the equivalent responsibility or equivalent respect, equivalent power of the chairman. But when the chairman is on the duty or when the chairman is taking the responsibility, then the vice chairman is free. But when it seems that the chairman is absent or the chairman is unable to do certain kind of activities and there is the need of someone to take the responsibility of the office of the chairman, then the person who comes forward, who takes the responsibility, who manages all the important tasks of the chairman, that person is called the vice chairman. ठीक है? So in the same way, when we have discussed about the president of the India, then there must be the presence of the vice president of the India or not. Obviously, like we know in the every situation already हम लोगों ने ये बात पे डिस्कस किया था, like there might be the situation जहाँ पे president उनका power और authority लेने के बाद भी there might be some situation there might be certain days he will be unable to continue his office. There will be certain situations जहाँ पे उनको resign देना पड़ेगा या फिर he is going out for a trip और he is going out for a foreign agreement और किसी भी काम के लिए वो बाहर जा रहे हैं. So in that point of the time, there is the need of a person who is going to handle the presidential office when the president is absent. And that person is called the vice president of the India. Got it? So vice president is the most respected authority after the president of the India. प्रेसिडेंट के बाद अगर इंडिया का दूसरा कोई हायर अथॉरिटी माना जाता है then that will be the vice president of the India. Got it? So when we are talking about the vice president of the India, according to Article 63 of the Indian Constitution, it speaks that there shall be a vice president of India. 63 of the Indian Constitution क्या बोलता है? हर एक in India
देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ ए वाइस प्रेसिडेंट। एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सन, the section, article 64, it speaks that vice president is the ex officio chairman of the council of the states. council of the states का क्या मतलब है? राज्यसभा। so the vice president is the ex officio chairman. that means the chairman of the Rajya Sabha कौन है? vice president is the chairman of the Rajya Sabha. got it? Second, yeah. So when we are talking about the responsibilities of the vice president under Article 65 of the Indian Constitution, it speaks that the vice president is to act as the president or discharge his functions during the casual vacancies in the office or during the absence of the president. So यहाँ पे आर्टिकल 65 क्या बोलता है कि when the president is absent in the office, when the event of the occurrence of the any vacancy in the office of the president, जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस पे नहीं रहते हैं, आइदर उनका इम्पीचमेंट हो गया हो और रेजिग्नेशन दे दिए हो या फिर वो कोई फॉरेन डील के लिए कोई भी काम के लिए बाहर गए हो, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस में जब प्रेसिडेंशियल ऑफिस पे to take the responsibility, there is no one is present at that moment. The responsibility, it comes to the next person after the president to take the chair. That person is called as the vice president. Got it? So यहाँ पे आर्टिकल 65 क्या बोलता है? Let's understand it one by one. First क्या बोल रहा है? In event of the occurrence of the vacancy in the office of the president by the reason of the death, जैसे मैंने बताया डेथ हो गया, रिजाइन और रिमूवल और रेजिग्नेशन दे दिए या फिर उनको हटाया दिया गया है ड्यू टू द इम्पीचमेंट, अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट until the date on which a new president is elected accordance with the provisions of the chapter. Got it? The second point क्या बोलता है? When the president is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the vice president shall discharge his functions until the date on which the president resumes his duty. तीसरा point, the vice president shall, during, in respect of the period while he is so acting as discharging the functions of the president, have all the powers and immunities of the president and be entitled to such emoluments, allowances may be determined by the parliament of the law, and until the provision in behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as specified in the second section. So this article 65 क्या बोलता है? I'll be making you understand one by one. चलिए समझते हैं। पहला आर्टिकल का क्लॉज 1 ये बोल रहा है when the president is absent in the office, कौन सा पहला रीजन है उनका डेथ होगा, the death of the president during the carriage of his office. दूसरा सिचुएशन removal of the president from his office. तीसरा रेजिग्नेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर मतलब उनका कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे उनको ऐसा लगता है कि that president is unable to continue the responsibility as the presidential power, तो वहां पे वो क्या करते हैं? रिजाइन देते, he puts his resignation. तीसरा रिमूवल मीन्स इम्पीचमेंट हो जाता है, उनको हटा दिया जाता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ हिज इलीगल एक्टिविटी और अनऑथेंटिक एक्टिविटी, उनको अपना डेजिग्नेशन. सो इन दिस सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर इज नो अथॉरिटी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, सडनली ऐसा जिस प्रेसिडेंट का सीट है तब तक जब तक नया प्रेसिडेंट ना आए, हु इज ऑथराइज्ड टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट? The answer is वाइस प्रेसिडेंट. जब तक प्रेसिडेंट एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके ऑफिस को ना आ जाते तब तक प्रेसिडेंशियल चेयर को कौन संभालते हैं?
वाइस प्रेसिडेंट ही संभालते हैं until and unless the new election is being taken place and the new president is joining in the office. समझ में आया? जब भी प्रेसिडेंट का दिक्कत होता है उनको रिमूव किया जाता है, उनको या फिर वो रिजिग्नेशन देते हैं या फिर फॉर एनी काइंड ऑफ द रीजन ही इज बीइंग डेड, वो मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है. इन दैट काइंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, if any person is taking the charge of the office of the president until and unless नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन खत्म हो जाए एंड नया प्रेसिडेंट ऑफिस ज्वाइन कर ले, तब तक द पर्सन इज कॉल्ड द वाइस प्रेसिडेंट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट. क्लियर? ये हो गया आपका क्लॉज 1 पे. क्लॉज 2 पे क्या बोला गया? क्लॉज 1 पे बोला गया जहां पे प्रेसिडेंट परमानेंटली, मतलब परमानेंटली उनका डेथ हो जाता है, परमानेंटली उनको रिजाइन कर देते हैं या फिर परमानेंटली उनको रिमूव किया. एंड द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड क्लॉज स्पीक्स अबाउट द टेम्पररी एब्सेंस. जैसे कि उनका तबियत, और मैंने बताया जैसे एनी काइंड ऑफ एब्सेंस और एनी अदर कॉज, कोई ऑफिशियल ड्यूटी के लिए वो बाहर गए हुए हैं या फिर ही इज हैविंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम जिसके वजह से वो कुछ दिन के लिए official duty. Got it? So when the situation becomes like this, in these circumstances, also the vice president takes the charge of the presidential office until and unless the president comes back to the chair. जैसे कि अगर आप स्कूल के बारे में देखे होंगे, जब स्कूल पे स्कूल का जो प्रिंसिपल है 5 दिन 6 दिन 7 दिन का छुट्टी में जाते हैं, तो उनके जगह स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते हैं? वाइस प्रिंसिपल लेते हैं. जो भी ऑफिशियल काम होता है, जो भी ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, जो भी ऑफिशियल नोटिस जाता है बच्चों को, वहां पे प्रेसिडेंट के जगह किसका साइन रहता है? सॉरी, वहां पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का साइन रहता है. तो ऑब्वियस बात है, वाइस प्रिंसिपल, when the principal is absent in the school for any kind of certain personal reasons for a temporary period, then if a person is taking the responsibility of the president, that person is the taking the responsibility of the principal, that person is called the vice principal. In the same way, अगर प्रेसिडेंट का तबियत खराब, कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है, वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम पे फंस जाते हैं या फिर कोई ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, तो इन दो circumstances, that might be 1 day, that might be 2 day, that might be 5 day, that might be 1 month, that might be 2 months or 3 months or 4 months or 5 months or 6 months, whatever the duration it might be, it doesn't matter, right? When the duration doesn't matter over here. It actually depends कि प्रेसिडेंट का कौन सा काम है, वो कौन सा काम के लिए गए हैं एंड वो कब तक वापस आएंगे. 1 दिन पे आ सकते हैं, 10 दिन भी लग सकता है. वो 1 दिन के लिए छुट्टी पे रह सकते हैं, 2 दिन के लिए छुट्टी पे रह सकते हैं, 10 दिन के लिए छुट्टी पे रह सकते हैं, 20 दिन के लिए छुट्टी पे रह सकते हैं एंड 1 महीने के लिए भी छुट्टी पे रह सकते हैं. सो इन दो सर्कमस्टांसेस, अगर प्रेसिडेंट का चेयर तभी तक नहीं रहेगा, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ द समवन जो प्रेसिडेंट के एब्सेंस में उनका ऑफिस हैंडल कर पाए. दैट पर्सन इज द वाइस प्रेसिडेंट. क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको क्लॉज 2. क्लॉज 3 में क्या बोला जाता है? जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का चेयर संभालते हैं, तभी उनको प्रेसिडेंट का सारा पावर मिल जाता है. ही इज ऑथराइज्ड टू यूज ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. उनको प्रेसिडेंट को जितना सारा, मतलब what kind of benefit and all the kind of things president get, like उनका power है, the benefits of the residential benefit, the financial benefit, उनका प्रेसिडेंट का जो जो चीज है, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइस प्रेसिडेंट निभाते हैं. एंड as acting as the temporary president, even if that person is acting as the temporary period as the president इतना सारा एक्सपेंसेस रहता है, प्रेसिडेंट का जितना सारा बेनिफिट रहता है, प्रेसिडेंट का जितना सारा पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर रहता है? कम्स अपन द वाइस प्रेसिडेंट. तो आर्टिकल 65 आपको समझ, आर्टिकल 65 पे हमने बेसिकली 3 चीजों के ऊपर बात किया.
पहला क्लॉज ये बोला कि अगर परमानेंटली प्रेसिडेंट है, उनको वो रिजाइन दे देते हैं या फिर उनको हटाया दिया जाता है. इन दैट सिचुएशन द प्रेसिडेंट इन द प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक नया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ना हो जाता, तब तक इफ द पर्सन टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, द पर्सन हु मैनेजेस द ऑफिशियल स्टफ्स, दैट पर्सन इज द वाइस प्रेसिडेंट. सेकेंडली हमने क्या समझा, जब कोई टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट को भी पर्सनल फैमिली का काम पे फंस जाते हैं, या फिर द प्रेसिडेंट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ सर्टेन पर्सनल प्रॉब्लम्स, और एट द एंड ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे प्रेसिडेंट को किसी भी काम से बाहर जाना होता है, देन टिल ही कम्स बैक टू द ऑफिस, अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, देन वो होता है वाइस प्रेसिडेंट. एंड क्लास 3 ये बोलता है, when the vice president takes the responsibility of the chair of the president, then what happens? The vice president is entitled to enjoy all the benefits given to the president. प्रेसिडेंट को जो जो बेनिफिट, जो जो पावर मिल रहा था, सारा कुछ किस देगा? वाइस प्रेसिडेंट को. क्लियर? देन आर्टिकल 66 speaks about the election of the vice president, and it is very simple in nature. Like the vice president, who elects the vice president? The member of the both the houses of the parliament. That means the members of the Lok Sabha and the members of the Rajya Sabha elects the vice president of India. And it is most important to distinguish here what is the difference between the election of the president and election of the vice president. जब हम presidential election कर रहे थे, then we have understood that the president had been elected by the people of the members of the Lok Sabha, the members of the Rajya Sabha, and lastly the members of the legislative assembly. Okay, Lok Sabha के member, Rajya Sabha के member and the member of the state legislative assembly, हर कोई मिलके किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट. बट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनके मेंबर को कोई, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द वोटिंग व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज बीइंग चोजन. Vice President by the both the houses of the parliament. That means the Lok Sabha and the Rajya Sabha members, they choose the Vice President of India. Got it? Then comes the clause 2 of the article. Yeah, Article 66 clause 2, it speaks that the Vice President shall not be a member of the either house of the parliament or of a house of a legislature of any state. And if a member of either house of the parliament or house of the legislature of any state be elected as the vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon the office of the vice president. When the vice president, कोई भी member होते हैं, that might be a legislature of any state, like the vice president might be elected as the member of the Lok Sabha, member of the Rajya Sabha, and at the end that vice president might be the member of the state legislative assembly. Got it? So when it comes to the vice president, जहां पे either वो state legislative assembly का member होते हैं या फिर वो लोकसभा का member होते हैं, any person who is the member of Lok Sabha, Rajya Sabha or state legislative assembly, that person is entitled and have an authorization to fight or to achieve as the position of the president or vice president. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद के लिए कोई भी मेंबर लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, या विधानसभा या विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, then that person can stand or can continue for the vice presidential election. Got it? Yes. For the eligibility of the election of the vice president, there must be certain rules and regulations that need to be followed, and that we have already discussed in the last class. First,
that person must be the citizen of the India. And second, that person must has completed the age of 35 years. पहला चीज ये है जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, that person must be above 35 of the years. उसको 35 साल से ज्यादा होना बहुत जरूरी है. एंड द सेकेंड पॉइंट की द पर्सन मस्ट हैव कंप्लीट द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. वो बंदा इंडिया का सिटीजन होना बहुत जरूरी. एंड दैट पर्सन must qualified for election as a member of Council of the States. Got it? The person who is qualified of the election for the election as a member of the Council of the States. ये नहीं बोल the person must be the member of the Council of the States. No, the person must be qualified to become a member of the Council of the States. बाकी चुनौती like that person is winning the election or not, that is dependent upon the public, right? But if a normal person is eligible to take the responsibility, then if a normal person or any kind of official, the person who is working under the state or any kind of the working authority, they cannot stand as the vice president of the India. Got it? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस थी. तो हमने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 हमने ये पढ़ा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, that should be done by the both of the houses of the parliament. That means the Lok Sabha and the Rajya Sabha, they together elect the vice president of the India. Got it? Then the second point comes, the vice president is qualified to be elected as the member of the Council of the States. Okay, got it? तीसरा पॉइंट क्या समझा हमें कि अगर एक पर्सन who is getting elected by the vice president, that person might be the member of the Lok Sabha, member of the Rajya Sabha, or member of the state legislative assembly. That means the candidates we are choosing upon, that might be a Lok Sabha candidate, a Rajya Sabha candidate, or a candidate from the state legislative assembly. Whoever candidate we are choosing upon, they can compete for the designation of the vice president. Got it? Yes. And then which is vice president जब इलेक्शन विन कर जाते हैं, मान लीजिए आई एम द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड आई एम स्टैंडिंग फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ द वाइस, बट इफ आई विन द vice presidential election by the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, then क्या होता? That person can be elected as the vice president of the India, but after the election उनको अपना पहला ऑफिस छोड़ना पड़ता है. That means if I am continuing as the member of the parliament, then I have to leave my designation of the MP if I am joining as the office of the vice president. And this is obviously genuine, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा डेजिग्नेशन मिल रहा है, आप कोई छोटा मोटा मेंबरशिप का डेजिग्नेशन में क्यों रहना चाहोगे, है ना? Then comes Article 67, which speaks about terms of the office of the vice president, and इनका भी term equivalent to the term of the president, जो कि यूजुअली बोला जाता है कितना? 5 years. Okay. Then comes the vice president may, by writing under his hand address to be the president of the India, resign from his office. जब वाइस प्रेसिडेंट को अपना 5 साल के रेजिग्नेशन देना होता है, तो वो क्या करते हैं? He gives a resignation letter to whom? To the president at his office. Got it? Second क्या बोला? Vice President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office. A Vice President may be removed from his office by the resolution of the Council of the States and must be approved by the members of the Council of the House of the People, and that should be passed with a majority amount. Okay. Third point क्या बोलता है? The Vice President in the expiration of his term continue to hold office until the successor enter upon his office. जब तक उनका नया सक्सेसर ना आ जाता है, तब तक the vice president holds
upon the office. Got it? तो यहाँ पे जो चीजें बताया गया है कि द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो पहला चीज ये पढ़ा कि when we are talking about the terms of the vice president of his office, then the term of his office is usually 5 years. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर बस थोड़ा सा अलग है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, जहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे आर आल्सो इन्वॉल्व, उन लोगों को भी वोटिंग करना होता है, बट इन द केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट the only members of the Lok Sabha and Rajya Sabha they elect the president. Vice president का इलेक्शन के लिए the members of the state legislative assembly are not involved, but the election of the president, the members of the both the houses as well as the member of the state legislative assembly they have been involved. पहला चीज है। दूसरा चीज क्या बताया, the vice president may by writing his hand addressed to the president resign his office. वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जब उनको ऑफिस से रिजाइन देना, अपने मर्जी से अपने तरीके से, लाइक प्रेसिडेंट का पहला 5 साल कंटिन्यू करेंगे, दूसरा रिजाइन देंगे, तीसरा प्रेसिडेंट का रीजन भी अलग था, एक उनका तबियत खराब हो गया, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो गया, मेंटली इंसेन हो गया, संभाल नहीं पा रहे, इन दोज केसेस, राइट। बट in this case of the vice president also the same thing applicable, जहां पे वाइस प्रेसिडेंट अपना ड्यूटी 8 साल तक ड्यूटी कर लेते हैं, जहां पे वाइस प्रेसिडेंट को नहीं लगता कि नहीं अब से मुझसे नहीं हो रहा, या फिर आई एम अनेबल टू कंटिन्यू द ऑफिस एज द वाइस प्रेसिडेंट ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ इलनेस और मेंटल प्रेशर और कुछ भी रीजन हो, देन द वाइस प्रेसिडेंट कैन हैंड ओवर हिज हैंड रिटन रेजिग्नेशन टू whom, टू द प्रेसिडेंट। अपना हैंड रिटन रेजिग्नेशन किसको पास करते हैं, कि passes the handwritten resignation to the president. Got it? And the third point speaks about the removal of the vice president, जहां पे ये बोला जाता है कि जैसे ही the vice president before the expiration of his term can be removed from his office of the vice president via the council of the states by the resolution, right? यहाँ पे एक और चीज अच्छा चीज बोला जाता है, जब हम कोई प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कट करते हैं ना, देयर कम्स वन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज रिजोल्यूशन। पहले रिजोल्यूशन साइन होना बहुत जरूरी है, एंड दैट रिजोल्यूशन इज बीइंग साइन। गॉट इट? ये जो रिजोल्यूशन साइन होता है ना, दैट मस्ट बी साइंड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस। बट जब हम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के भी यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तीनों का मेंबर को इंक्लूड, बट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमने ये समझा कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर करते हैं, एंड जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देना चाहते हैं देन द वाइस प्रेसिडेंट पुट्स हिज हैंड रिटन रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी हैंड एड्रेस्ड। अपने हाथ में वो रेजिग्नेशन खुद लिखना बहुत जरूरी होता है। गॉट इट? एंड तीसरा पॉइंट हमने क्या सोचा, तीसरा पहला क्या 5 साल कंप्लीट कर लिए, दूसरा वो रिजाइन दे दी, तीसरा रिमूवल। जब रिमूवल की तब दो चीज आप सामने रख के चलिए। पहला चीज, जब वाइस प्रेसिडेंट को अपने डिजिग्नेशन पे रिजाइन किया जाता है तभी उनको पहले एक रिटन रिजोल्यूशन के थ्रू ही हटाया जा सकता है। इट मस्ट बी डन विद द रिटन रिजोल्यूशन। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ऐसा आप आएंगे और बोलेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो और वो हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। सो फॉर his removal from his office of the vice president, there must be certain rules and regulations which need to be followed. पहला क्या होता है, the person who is getting, पहला पॉइंट क्या होता है, the vice president, उनके बहुत जरूरी होता है that resolution must be written. सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, जब resolution पास, after that the council of the states
या फिर द काउंसिल ऑफ द पीपुल, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी बात कीजिए, मेजोरिटी क्या होता है मेजर टाइम पे, फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द राज्यसभा, देयर इज ए पॉइंट अराइज कि जहां पे उन लोगों ने ये बात पे डिस्कस करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट, देन दे पास ए रिजोल्यूशन विद द मेजोरिटी अप्रूवल, पास करते हैं वहां पे एक नहीं पूरा राज्यसभा मेंबर का मैक्सिमम नंबर ऑफ, when we're talking about yes when we're talking about the resolution must be approved by the maximum number of the people from the Rajya Sabha. Okay, and then the resolution comes to the Lok Sabha. And when the resolution comes to the Lok Sabha or the lower house, the house of the people, in the house of the people, that must be approved by the house of the people or the member of the Lok Sabha. Got it? And after being approved by both the houses, in this case, the person is called to be impeached or dismissed from the vice president. बट यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस है, क्या पता है आप, प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट हो रहा था ना, तब बोथ द हाउसेस ऑफ द मेंबर्स नीड टू गिव देयर असेंट ऑन दैट, दोनों हाउस का असेंट बहुत जरूरी था, but that assent was 2/3 in nature. 2/3 of the people must need to give their assent for the removal of the president. But यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ बोला जाता है द मेजोरिटी अप्रूवल मस्ट बी देयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए देयर आर 540 मेंबर्स इन एट ए होम और 321 मेंबर्स एट ए होम, देन अगर उनमें से 100 लोगों ने बोलते हैं कि नहीं, बाकी 200 लोगों बोलते हैं कि हाँ इनको हटा देना चाहिए, तो जो मेजोरिटी डिसीजन होता है वही माना जाता है. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अमाउंट 2/3 और 1/3 ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट मायने नहीं रखता. बट in both the houses, the majority of the members, they must need to give their approval for the removal of the vice president, तभी जाके वाइस प्रेसिडेंट को हटा पाएंगे. Got it? So here goes with the terms of the office of the vice president, जो कि यूजुअली 5 साल पहले अगर उनका तबियत खुद रिजाइन कर देते हैं, नहीं तो the people from the both the houses, पहले राज्यसभा में या फिर the house of the states, they create a resolution जहां पे through the resolution they has been मतलब put the interest और pass the bill to the लोकसभा, एंड उनको वही लोकसभा पे भी the maximum number of the members, they need to put their approval for the passing of the bill, and then only the bill has been passed. यहाँ पे as like the president मेजोरिटी और 2/3 मेंबर का अप्रूवल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे जस्ट मेजोरिटी मेंबर के फ्रॉम द बोथ द हाउसेस अपॉन द स्पेसिफिक रिजोल्यूशन, एंड वंस it is being approved both the houses of the parliament, then the vice president is called to be removed or impeached from his office. Got it? Because it's democracy at the end. Okay, so here it is. So from Article 68 onwards, we are going to continue tomorrow. That means in the next class. Thank you.